हेलो ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज विष्णु सोलंकी और आप देख रहे हैं वीएस कोडिंग वे क्रिएटिविटी बिगिंस। सो लेट्स गेट इनटू इट। ये मेरा फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे एंड टुडेस टॉपिक इज रोड मैप टू वेब डेवलपमेंट 2021 and beyond. So this is the map of web development and as you see there are lots of technologies, lot of skills and lots of domains which are required for web development. But professional chooses specific number of domains like front end, back end, full stack, database and UI UX and lots more. So I will tell you the specific and most valuable fields that you require or you need to learn for your future. Okay, so let's start from front end development. फ्रंट एंड डेवलपमेंट को हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। मीन्स क्लाइंट किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से इंटरेक्ट करेगा वेबसाइट से, वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए, कैसा उसका इंटरफेस होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ये सब फैक्टर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन अराइजेस, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? 3 skills are required basically. First of all HTML, second is CSS and third is JavaScript. HTML, CSS, JavaScript, these are basic of web development. Okay, to start web development career, अगर आपको web development का career start करना है तो आपको ये 3 skills आनी चाहिए. Okay, HTML, CSS, JavaScript, ठीक है. And after that you need to learn about framework. There are lots of framework, ठीक है. Framework, CSS framework is a Bootstrap and any Bootstrap 5 and JavaScript framework is React and Angular and Express. These all are framework of front end development. Okay, so now question arises, framework क्या होता है? Framework होता है जैसे हमें साइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस जैसे मोबाइल में फिट आनी चाहिए, टैबलेट में फिट आनी चाहिए, लार्ज स्क्रीन में, स्मॉल स्क्रीन में, सब जगह से फिट आनी चाहिए। तो वो काम अगर हम बेसिक कोर HTML, CSS और JavaScript से करेंगे तो इट विल टेक अ मिलियंस और थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड राइट एंड. ओके, सो framework helps us to make it easy and make it responsive for us and for client also to interact. So this framework you need to learn, and the thing is you can learn it free. कैसे? First of all by YouTube, second by paid courses or free courses available like Udemy, Coursera and many more courses are available in there. Okay, so YouTube के 2-3 चैनल है जो मैंने अपने टाइम में रिकमेंडेड किए थे, like coder and dev ad. The links are in description. Okay, so these are all about front end development. Now in front end development you will need to learn projects. You will build your own projects, start from small projects and gradually it can become, or by updating it can become a big project. Okay, so हमें छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए by basic equipments, by using of basic attributes and elements. Okay, by this you can make small projects and gradually it become larger. तो ये बात हो गई फ्रंट एंड डेवलपमेंट की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट. ओके, सो बैक एंड डेवलपमेंट में इसको हम बोलते हैं सर्वर साइड डेवलपमेंट. ठीक है, सर्वर साइड डेवलपमेंट मीन्स जो हमने डाटा इनपुट किया है वेबसाइट में, जैसे हम फॉर्म को ही भरते हैं, जो डाटा है वो सेव होता है सर्वर में, वो सब प्रोग्रामिंग, वो सब रिट्रीव करना, वो सब बैकएंड डेवलपमेंट में आता है. ठीक है, तो बैकएंड डेवलपमेंट में बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेजेज है, तो पर मेनली जो फेमस है और जो बहुत अच्छी है लर्न कर बिगनर्स के लिए वो है, पहले तो जेंगो है, फिर दूसरा है जेंगो हुआ, फिर Node.js हुआ, ये सब अलग अलग लैंग्वेज आती है, एक्सप्रेस हुआ. सो Node.js मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपकी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है, मीन्स अच्छी लैंग्वेज आपकी है जावास्क्रिप्ट. अगर आप यू आर मास्टर्स इन जावास्क्रिप्ट, तो आई विल सजेस्ट यू गो टू Node.js बिकॉज इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट वेयर जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड. ओके, तो आपको आसान रहेगी. एंड अनदर थिंग इज जेंगो इज अ फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन. ठीक है, अगर आपकी पाइथन लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है या आपकी पाइथन लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आपको जेंगो में जाना चाहिए बिकॉज इट विल नॉट नीड एनी अदर लैंग्वेज टू लर्न फॉर बैक एंड डेवलपमेंट. आप उसी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, बैक एंड के लिए. So I suggest you, if you are good in JavaScript, go to Node.js, and if you are good in Python, then go to Django. Now another thing came that database. अब database क्या है? Database हम सबको पता है
database is used to store data, to manipulate data, to retrieve the data from the database. Okay, तो ये सब आता है database के अंदर. अब there are lots of database technologies like MySQL हुआ, Oracle हुआ, MongoDB हुआ. So this is depend on you that which skills you learn fast and which you like the most to, that makes you easy and comfortable to learn. Okay, तो ये आप है. Then now they are, if you learn front end and if you learn back end and you have some information of database, then collectively it called full stack developer. Okay, now you have all three of skills, all three of knowledge, now you will call as full stack developer. अब ये full stack developer कौन होते हैं? फुल स्टैक डेवलपर वो होते हैं जो पूरी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाते हैं, क्लाइंट साइड से भी, सर्वर साइड से भी, एंड स्टोर डेटाबेस एंड मैनेज ऑल डेटा. ओके, तो ये सब फुल स्टैक डेवलपमेंट है. टू थिंग्स कम इनटू पिक्चर. पहली चीज मीन स्टैंड्स फॉर MongoDB, Express, Angular and Node.js. ठीक है, दिस इज अ कलेक्टिवली कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट. हैज MongoDB डेटाबेस हो गया, फिर एक्सप्रेस कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क हो गया, सेकंड आ गया अपने एंगुलर फ्रेमवर्क जो फ्रंट एंड के आता है और जो Node.js बैक एंड पे आता है. तो दिस कलेक्टिवली कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट. ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट इन फुल स्टैक डेवलपर, यू कैन गो फॉर मीन. One thing I will tell you that for Angular framework, you need to learn TypeScript. So it is a secondary language you have to learn for using Angular framework. Okay. Second thing comes that MERN means MongoDB, Express and React and Node.js. So this is another term where you can learn or improve MongoDB, Express. As I told you, MongoDB is a database, Express is a connectivity framework, React is a JavaScript framework for front end development, and Node.js is also for back end development. Is back end development, okay, by JavaScript only. So if you are learning HTML, CSS and JavaScript, I will strongly suggest you to go from MERN. Because you don't need to learn new language or new programming language. आपको किसी programming language new सीखनी नहीं पड़ेगी for using framework. Okay, so don't worry. From my point of view, MERN is a better option for you for beginners only. Okay, now you have a sufficient knowledge of front end, back end, database. Okay, now a question arises and you have to ask yourself that can you build a full stack CRUD website? And now what is CRUD, right? CRUD stands for create, read, update and delete. Okay, if you combine all the things in a website, if you have done all the things in a website, then you are become a full stack web developer. It is not necessary, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में ही जाना है. आप फ्रंट एंड में भी मास्टरीज कर सकते हैं, आप बैक एंड में भी मास्टरी कर सकते हैं. There are lots of people who earn good amount of money by doing masteries in one of the field, or you can select a database, or where you manage retrieve data. Okay, so it depends on you. If you manage all the things, become a full stack developer, no issue. But I suggest you first master in one field, then go to other. If you do together, you will in big problem. Okay, so I suggest you do masteries in one, then go to others by your own interest. Okay, ये आप पे डिपेंड करता है आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है. So that is all for today guys. If you like this video, hit the like button, comment down below and stay tuned in this channel for more videos of web development, Python, coding, programming and lots more. So subscribe to my channel, hit that bell icon and we'll see you next video. Okay, bye bye.